लोग कहेंगे लोग का काम है कहना, बट देखो यार हमारे पास बहुत टाइम है तो आप सुनते रहना। मेरे सामने कोई कुछ ज्यादा बोल सकता है क्या? ये वीडी नहीं है। शौहर तो नहीं मिला, धोखे बड़े मिले। I'm a queen, I'm not a He has a girlfriend outside. उसने मुझे बेवकूफ बुलाया। वो आपको एक बात आकर बोलेगा, पीछे जाके बोलेगा मैंने कब बोला। हाँ. Just like that. Mia like yelled Yelled at at him. Mia him. like what are you saying? क्या पता अभी मौका मिल जाए। ना अगर दिमाग मैंने चला लिया होता तो मेरा शौहर कोई और नहीं होता। तुम्हें शो नहीं जीत जाती है। Every time she's saying Balu, it's so funny. You just start playing your women card. मैंने जो मुझे लगा सही था मैंने किया. Women card से तो लड़कियों को चिढ़ ही मचती Yeah. है। I think my brain is definitely in my ass. Welcome to another episode of Don't Spill Too Much, जहाँ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही spill करते हैं. Honestly, this is my favorite series because I get a chance to talk to all the Splitsvilla contestants, which means a lot of controversies. And today we have two beautiful girls on this couch, जो Splitsvilla गई तो थी प्यार और पैसा ढूंढने, but लेकर आई सिर्फ धोखा और trust issues. So let's call them here and have a quick chat with them. Let's give it up for Khushi and Simran, you guys. Thank you so much. I think we're very overwhelmed to like talk to you about everything, and I'm also very excited to be here. Oh, thank you. जो चीजें पीछे छूट गई है उस चीजों के बारे में बात करने का आज फाइनली मौका मिल रहा है, तो क्या पीछे छूटी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप किसको पीछे छोड़ के आई हैं? मैं तो बहुत लोगों को पीछे छोड़ कर आई हूँ। You mean Arav? और योगेश? No, Ayush. और अनुज? दोनों को घर भेजा है तो यार क्यों बुला रहे हैं पनौती? I wanna know that. या लाइक पीपल लाइक आपने जिसके साथ भी कनेक्शन बनाया दोनों डंप हो गए हैं। एंड पहली तो बात आई जस्ट वांटेड टू क्लियर कि मैंने अनुज के साथ कनेक्शन नहीं बनाया था। अगर वो एपिसोड देखा होगा लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कट जाती है जो आती नहीं एपिसोड में, तो वो चीज़ें देखने के बाद उन्हें ये पता चला है कि नहीं, आई डोंट नो, बट देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे हमें सनी मैम ने कहा था कि वी हैव टू पेयर अप विद समवन, क्योंकि वो बाद में बताएंगे मे बी कोई चैलेंज हो सकता है या कुछ हो सकता है टू प्रूव योर सेल्फ बिकॉज आप अनसेफ जोन में हो। तो अभी हम ऑलरेडी एक प्लान करके आए थे, हमारा जो अलायंस था हम ऑलरेडी एक प्लान बना कर आए थे कि हमें क्या करना है इफ़ इन केस कुछ हो रहा है तो। एंड ऑब्वियसली जो दूसरे अलायंस में से सौरभ था आइडल, वो अकेला था, तो दे वर लाइक व्हाई डिड यू नॉट पेयर अप विद सौरभ, व्हाई डिड यू पेयर अप विद अनुज। सो टेन और सदफ आइडल मैच के लिए जाने वाले थे एंड अगेन हमारा एक ही अलायंस था, तो आई थॉट कि वो सेफ रहेगा, इसलिए मैंने अनुज के साथ पेयर किया था। बट वो लोग ये बन नहीं पाए, आइडल मैच बन नहीं पाए, और मिस्चिफ मेकर्स ने एक मिस्चिफ निकाला जिसमें जो बाकी दोनों के कार्ड्स पे जिनका नाम था उनको डंप होना ही था, तो ऑब्वियसली मैं और अनुज ही डंप हुए। बट देन लेटर वी गॉट अ चांस अगेन कि हम परफॉर्म कर पाए, वापस अंदर जा पाए शो में विद अ सेकेंड चांस। तो मेरे सामने कोई कुछ ज्यादा बोल सकता है क्या? मैं बोल दे गई, वो सुनते मैं ये सोच रही हूँ ये एपिसोड में हमने देख लिया, तो ये बता ना कि तू पनौती क्यों नहीं है। Yeah, it's explaining the episode. फिर ये हुआ, फिर ये वीडी नहीं है। आई डोंट नो, बट इट्स लाइक अभी वो कोइंसिडेंस था कि क्या था, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि मैंने अनुज के साथ कनेक्शन नहीं बनाया था, और आरव का भी बहुत स्टार्ट से पूरे इनके अलायंस के साथ बहुत झगड़ा हो रहा था, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चांसेस थे आरव के घर जाने के। बट अगेन इट वाज अ कोइंसिडेंस कि वो अकेला था, सिंगल था, एंड आई केम इनटू देयर विला, पैसा विला, और हमने पेयर बनाया, हमें कनेक्शन बने, बट वो भी डंप हो गया। बट वो मेरी गलती नहीं है। Yeah, of course, who's blaming you? Because when you came and तुम्हारा दोनों के साथ कनेक्शन बना, ये दोनों जो लड़के आउट हुए, they were not very vocal in the show. Yeah. So it was not you, it was them. Like वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो of course the makers would want them to be out of the show ना, क्योंकि वो शो चलाना चाहते हैं, they are also there to make money. People don't understand that. I feel like आप तो पनौती हो, आप एक काम करो, आप इनके साथ ये जो गिने चुने लड़के हैं इनके साथ पैर करो, क्या पता ये भी डंप हो जाए। पर तो पनौती तुम तो लकी हुई ना उनके लिए कि कंपटीशन निकाल दिया। Yeah. ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। Okay, खुशी, so
Tell me, how was your journey? Because this is the first time you were doing splits, and Honestly, I had a lot of fun. Connection थोड़ा नहीं बन पाया, यहाँ वहाँ problem हो रही थी. But other than that, I was actually enjoying the show. I made a lot of friends. I had a good experience overall, honestly. There were highs and lows. हाँ, थोड़ा रोना भी था, झगड़े भी थे, but थोड़े झगड़े थे. but it was fun. पैसा विला में तो लोग झगड़ ही रहे हैं यार. They are not stopping only. मतलब in प्यार विला we were able to see little love, like connection, थोड़ा connection, something. warmth है, Yeah. लोग sweet भी है. But in पैसा विला everybody is like snatching, मार रहे एक दूसरे को. मतलब क्या चल रहा है ये? Don't talk about snatching. Yeah, I know. Don't talk about snatching. Okay, so tell me one thing. You were there in the game and you were supporting your girls, right? Yes. But in the end, when you got voted out, it was because of Kyra. And Yes. now, because of Kyra, you are also getting a lot of hate, even because of Gullu. Yeah, what do you have to say about मतलब that? I have supported Kyra and Gullu. It's not more about Gullu. I think ज़्यादा Kyra और Zalak और Preet, we were like close. So मैं उनको ज़्यादा support कर रही थी throughout my journey, and I'm getting hate because of that. But I had to be who I am, and even in the game, I can't not be who I really am just because I'm somewhere else. I can't be like, you know what, I'm gonna snatch it from you. I can't be like that, dude. Like if I'm your friend, I'm gonna give my all to you. So that's what I did. And were you disappointed with Kyra? Yeah, a lot. हम लोग ने बात नहीं की after I came back, obviously. Even after the show was done, she reached out to me a couple of times. We didn't speak, but then she did explain her side to me. She thought that कि मुझे लव विला भेज देंगे वो लोग, और वहाँ पे मेरा थोड़ा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था वीशु और दीप्तांशु के साथ. सो आई वुड हैव समबडी टू रिलाई ऑन इफ आई गो टू लव विला. बट अगर वो प्रीत को भेज देती वहाँ पर, तो आयुष तब भी ही डंप हुआ था, तो शी वुडंट हैव एनीबडी टू रिलाई ऑन इफ शी गोज देयर. बेसिकली शी वांटेड ऑल ऑफ अस टू बी टुगेदर. एंड बट ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया ना. ये पता थोड़ी था कि आप जाओगे ही लव विला. मतलब she Yeah, was Even hoping. Arav didn't get a chance to go to Exactly. the प्यार विला. ये तो Yeah. बहुत convenient है that now that you are out of the show, she's trying to convince you, but you Yeah. were an easy target because you trusted and then you got betrayed. I mean, I Kutti would ho like to. gayi I still remember. I still remember when Khushi got voted out. You did not hug No, Kyra. I did She was not. like, not you, not you. she did not hug Kyra, and Kyra was like crying. उसकी पूरी Yeah. आँखें, उसका पूरा makeup, and she's like, I don't want to do this. I don't want to do this. मेरे दोनों friends हैं. But we were like, you have to choose someone, right? And she Yeah. chose you. That's just. So if you had a chance to go back again in the show, अभी तो नहीं मिल रहा है वो chance, unfortunately. But if you get a chance, would you go back and fight for those split coins जिसके लिए तुम नहीं लड़ रही थी? So basically my also reason was कि मैं नहीं चाहती, मैंने देखा था कि निहारिका के split coins आगे पहुंच गए हैं. Like she had made it in the challenge, so there was chances कि she would sit on the throne if at all Kyra doesn't earn any more here, क्योंकि next could be निहारिका. और मुझे नहीं चाहिए था कि हमारे ग्रुप से, कि हमारे ग्रुप के अलावा कोई जाए, because I know that if निहारिका was in power, I would be getting dumped. Okay. Like I would be in danger basically. So that is why I was also helping Kyra. Ki I was also helping myself in that while helping her. Basically, I was also thinking about myself. Okay. That was a dumb How was your journey, Simran? आपको शौहर मिला? शौहर तो नहीं मिला, धोखे बड़े मिले. किसने धोखा दिया आपको? मेरे खुद के ही कनेक्शन, जिससे मैं चाहती थी कनेक्शन बनाना, उसी ने मुझे धोखा दिया. Are we speaking about Yogesh? Yeah, but no, we are good friends outside the show, and it's fine, honestly. But apart from that, I have very good friends जो प्यार विला में मेरे साथ हैं. I'm still friends with them. We meet on not like on regular basis, but we meet, we make content together, and हम जैसे अंदर हमारा बॉन्ड था, आई थिंक बाहर आने के बाद हमारा बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बना है. वो कहते हैं ना, भले आपको रिलेशनशिप नहीं मिला, एटलीस्ट आपको दोस्ती मिली. But you also did win the title. Like, if you think about that, you got the opportunity to be in the show जहाँ से exposure and you get money and fame. And he took it away from you by eliminating you. So are you not upset with him? I was upset first when he dumped me, but again, obviously हमें तो यही लगा था कि टेन और सदफ आइडल मैच बनेगी और उनके क्यू कार्ड के हिसाब से सौरभ और सुजैन डंप हो गए, बट मुझे डंप कर दिया गया. And later when I got the second chance, again I got dumped by Yogesh.
सो तभी मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट देन आई वाज लाइक मैं एक ऐसे जगह पर हूँ, नो हेट फॉर एनी वन, एवरी वन वॉज गुड टू मी इन पैसा विला, बट आई फेल्ट लाइक आई डिड लूज माई स्पार्क वन आई केम टू पैसा विला फॉर सम रीज़न. आई मे बी कनेक्शन तो पहले ही दिन डंप हो गया, एंड अदर देन दैट जो मेरी एक फ्रेंड थी वो भी डंप हो गई. तो वो चीज़ का मुझे, मेरे साथ कोई नहीं था. आई यूज टू फील सो अलोन इवन दो आई वॉज विद पीपल, इवन दो आई वॉज विद द अदर कंटेस्टेंट्स जिन्हें मैं दोस्त बोलती हूँ, मुझे फिर भी बहुत लोनली फील होता था. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि शिट मैं डंप हो गई हूँ, बट देन आई थॉट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. And I was happy actually going back home. I was happy. Why? It's because the environment, the people I was with, it just got so toxic. Reality shows are meant to be toxic. It was my first reality show. I was not mentally prepared. But yeah, I was not itna prepared. I did know because I have few friends. Let's fill 13th का जो winner है. He's a good friend of mine. कौन है? Shrey Mittal. Okay. Shrey is a good friend of mine, and before coming to Spets, I did meet him like a day before, and he was like, तुम जा रहे हो, तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, अच्छी जगह होगी. बट वो पहले आई थिंक हुआ करता था, पहले आई थिंक जो Yeah. रियलिटी शोज थे वो पहले डिसेंट थे क्योंकि लोग इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और भी एलिमेंट्स थे ऐड करने के लिए. बट नाउ दे नो दैट मेकर्स आर गोना शो ओनली फाइटिंग, सो दे ओनली डू दैट थिंग. Yeah. सो एवरीबॉडी इज प्रिपेयर. तो वो एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है. टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ आल्सो. It really does. yeah. ही लाइक अभी भी थेरेपी Are you? No. लेनी चाहिए वो तो सबको ही. After coming from a reality show. Yeah. I was also very depressed when I did Rudy's. उसके बाद, because Why? they showed me that I am, which I'm not. But वो जिस हिसाब से एडिटिंग होती है, it's a very well edited show. तो yeah, of course आपको जब आप देखते हो कि भाई ये इंसान तो मैं हुई नहीं रियल लाइफ में, and they're portraying me in a Portraying different somebody. I can feel perspective. you. I can literally तो feel yeah, you. तो वो लगता है कि I didn't deserve this. So yeah, ठीक है. Depression. We all are making money. Yeah, That is that's what more matters. important. Yeah, Yeah. that's more important. But I do understand. I really, you know, I can feel you. Yeah. जब ये बात आप बोल रहे हो कि आपको as a portray किया गया, तो after my first elimination मुझे भी rude बोला गया कि मैं बहुत rude हूँ, which I'm not. Yeah, you're savage. I'm a savage. I'm a queen. I'm not a I'm a diva. Diva. Slay. But slay girly. but yeah, people called me rude because मैंने जो सच्चाई थी, जो ट्रूथ था, मैंने वो बोला और लोगों को वो चीज़ हजम नहीं हुई क्योंकि वो उनके फेवरेट के बारे में था. तो आई फील लाइक आप ऐसे ब्लाइंडली, इट्स सो ऑब्वियस कि आप अगर किसी के फेवर में हो, कोई आपका यू नो आइडल है, तो आप उनको पसंद करते हो, उनका जो एनिमी होता है, योर एनिमी इज माई एनिमी, वैसा सीन होता है आपका. बट यू नीड टू सी फॉर योर सेल्फ कि वो एक्चुअली सिचुएशन में क्या हो रहा है. तो that I understand when people, you know, they called you a bitch, people called me rude, Yeah. people called me a lot of things, and I don't give a तो fuck. रियलिटी शो में तो होता ही है ना. Somebody Yeah. will like you, somebody will not like you. But I was so sweet to everyone. I was like, You don't have to be Okay. sweet to everyone. Okay. Just because Simran? if they are being to you, you don't have to be sweet. That's it. yeah, Yeah. but yeah. Okay, so apart from being called rude, you were also called Bewakoof. I was called baby. You both were called Bewakoof. Yeah. By Dipanshu. Thank you, yeah. देखिए अब मैंने स्मार्ट लड़की को बाहर भेज दिया, मैं अब बेवकूफ से बात करूँगा, yeah. तो do you have to say anything about that? अब उसको सोचने देते हैं, अगर लगता है बेवकूफ है तो ठीक है. I don't feel care, like जो honestly. इंसान जो होता है उसको हमेशा सामने वाले लोग वैसे ही लगते हैं. Damn, now we are talking. Yeah, so he thinks that he's so smart. Maybe he is, but he's We don't not. care. He's not smart. He plays very dirty. He plays a very Yeah, dirty but a yeah. smart game. He's in those terms, he's very smart. But He's cunning. yeah, he's a Cunning. chunt. Yeah. Why are you saying that? Did he do something? तो बीच में हमारा भी ऑन एंड ऑफ चल रहा था, तो ही वॉज गिविंग मी दिस कि हाँ आई एम विथ यू ऑल्सो. ही वॉज ऑल्सो आई थिंक टेलिंग अस्मिता कि हाँ आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल्सो. या दैट ही इज़ वेरी कनिंग ऐसे, और वो सबको अपने वर्ड देता है कि हाँ आई एम विथ यू ऑल्सो, आई एम विथ यू ऑल्सो, बट वो एक्चुअली किसी के साथ नहीं होता है. मतलब वो सबको वो लीड ऑन सबको लीड ऑन करता है, बट ही इज नॉट रियली विथ एनीबडी एज सच. But he looks like a green flag. Huh? What? Just because he's cute, that doesn't mean he's a green flag.
So he's cute. Of course he's cute. I don't find So him. why did Why you did make I say connection with connection क्यों नहीं बनाया उसके साथ? If you found him cute. I think I was very confused at that time. मुझे game Between थोड़ा who? समझ Who was the नहीं आ fucking रहा था option? dude. Yeah, Khushi. यार I didn't find any. Vishu and Diptanshu. I didn't really like Vishu. ठीक है मुझे दीप्तांशु actually पसंद था. To like I liked hanging out with him. I liked doing this that. But What every is that? time just chilling with him I meant. So if I get him on the show right now, so you'll be And like, now तो he's not the same person ना. Yeah, of Now he's busy with somebody else. Yeah. ooh, Everybody knows. what? I don't know. He has I'm a not girl. using Reddit I'm these not days. saying मैं Reddit पे जाती हूँ खुद गाली खा रही होती हूँ मैं दूसरे का क्या ही पढ़ूँ. So yeah, Yeah, enlighten me please. He has a girlfriend outside. Yeah. Oh. I heard he had a girlfriend the entire time, but now we don't know. कौन है उसकी girlfriend? I wouldn't want to take names. घर जाओ बेटा चलो. दुखी मत करो मुझे खुशी. Give me info. Okay, so basically what had happened is I had texted Diptanshu जब वो बाहर आया था game से, ठीक है? That oh I heard you didn't miss me and shit like that. Yeah, I did that. Okay. दो तीन and we texted normally like it was just 1-2 like lines का conversation and it was it. So after like a couple of days, I'm getting a call from Diptanshu on Instagram and I was like, ये क्यों call कर रहा है? I didn't pick up. Then I see a text कि I'm Diptanshu's girlfriend, pick up the call. And I was like, dude, I didn't know you had a girlfriend in the first place. What? Wow. Yeah. And then she takes my number from Niharika apparently and she calls me on WhatsApp 7 times. 7 times. What did you text Diptanshu? I was like, क्या तेरे The only thing मैंने उसको message किया था, I heard you did not miss me. Oh my god. Was it fun? I hope you like just a normal how are you? I hope It you had wasn't fun. fun. I hope no. I hope you had fun in the villa because I heard he did well. So I was just asking कि हाँ I hope you क्या had चल fun. रहा है, हाँ अभी है कि normally नहीं यार है? normally बात करनी हाँ. थी. तो उसमें वो मुझे कॉल करके बोल रही है why you ask my boyfriend if he had fun? क्या mean? And I was like Yeah. what? मैं भी यही पूछती हूँ कि ऐसा क्या मजा मार लिया तुमने साथ में? नहीं मैं तो पूछ रही थी मेरे जाने के बाद how was it? Did you have fun normally like that? Okay, just as a okay. normal conversation, but she took it somewhere else, and I was just like, first of all, I didn't know your boyfriend had a girlfriend. I think your boyfriend should have told me he has a girlfriend. And she was like, yeah, now why are you texting him, this, that? And I was just like, dude, calm down. Why is he I'm not going entertaining to, I'm not going to like take your boyfriend away from you. I didn't do that in the show. What makes you think I'll do it now? क्या पता चीज हो जाए. You never know. You Episode never देखने know. के Yeah. बाद ये क्यूट तो है. उसने मुझे बेवकूफ बुलाया. Oh my God. That is so hard. That's it. We just had like this heated conversation for like 2-3 minutes and then उसके बाद she removed Diptanshu from my Instagram also. Who is she? Who are you talking about? I'm gonna blur it out. But who is she? You know who she is? Influencer है क्या? Yeah. Are we like beeping this? So I'll tell you who she is. Who is she? If you're putting this, then I'm not gonna say. वो है क्या? हाँ. She's from my city, bro. Okay. Yeah. Indore. Yeah. Yeah. He's yeah. also from Indore, na? Yeah. Diptanshu is also from Diptanshu. Indore. Oh, I didn't know. Yeah. Okay. Okay. तो ये पहले से डेट कर रहे थे. Yeah. ऐसा मुझे दूसरे लोगों ने भी बताया कि पता चला तब भी he that she used to send him stuff Yeah. while he was in splits. Yeah. कि Expensive हाँ expensive stuff. Yeah, of course she he's used to rich. send him. हाँ. इतना बोल दो इतना किसी के पैसा बारे में. इतना बोल दो कि लोग खुद ही गूगल कर लें. हाँ तो तभी लोगों को पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है. मुझे नहीं पता था. मुझे जब उसने कॉल किया तब पता चला कि okay bro. So did Fine. Diptanshu do something in the show? Like not no we are did- just helping another woman. Come on. no it wasn't like that. It's 2026. We are exposing men. It's time to do that. Okay, it wasn't like, okay, we didn't like make out, kiss or anything like that, no. But we did, he was kind of like being touchy sometimes here and there. A little bit like putting his hands on my thighs and like just playing with my thighs. And I was like, just stuff like that. It did not
reach escalate Yeah. from there. But if you have a girlfriend, I don't think that's the nicest thing to do. But then why are you in splits then if you have a girlfriend? Yeah, exactly. You Yeah. shouldn't be there Yeah. in the first place. Yeah. No, It's a I dating was- show. Yeah. ठीक है, career बनाने वाला भी है, get it. But then you have to also act with the other person. Yeah, like you are living मतलब, with yeah, them. You have to yeah. get to know them. You're What playing if you with fall them. in love with somebody Yeah, else in the show? in the It's so show. scary. Yeah. But I did hear that when I came out, जब ये सारी बातें सारी न्यूज़ फैल रही थी, रूमर्स फैल रहे थे कि दीप्तांशु ऑलरेडी हैज़ अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड, बट अंदर जाने के पहले दे ब्रोक अप, ही अनफॉलोड हर, शी अनफॉलोड हिम, और फिर वो आया और अब आने के बाद दे आर टुगेदर लाइक अगेन. Yeah. सो तो वो ब्रेक ले लिया. हाँ, ब्रेक break किया, था, देखो break मिल था, रही थी मार्केट में मेरे से बेटर. नहीं तो मेरे पास वापस आ जाना. बट नो ही इज सच अ फ्लिपर. Yeah. दीप्तांशु सच अ फ्लिपर. आपको एक बात आकर बोलेगा, पीछे जाके बोलेगा मैंने कब बोला. हाँ. It's like that. हाँ. But I don't know. I just think that he's cute. Yeah, because now he's also from your city. हाँ, थोड़ा biased. No, just because I want him on my podcast, I have to say, girl. Okay, he is cute. I would agree. I to didn't that. find it. अभी वो थाई वाला याद आ गया ना. Yeah, yeah. No, please. So if you like now, if you get a chance to like be somebody's connection, or who do you think is your ideal match now that you're watching this show? From the show? Yeah. No one, honestly. Honestly. Because I like older men. That's exactly what I was going to I'm say. into older How men. old? Like 25 at least. plus. How old are you? 21. Okay. उसको Yours old is नहीं कहते 20. हैं. I was I going said to say 25 30 above. something. So like 30, मतलब, 32, so I'm 33. old. I'm like 30 something at least. Yeah. 30 something. I am old. No, but yeah, 25 above means 28, 30, 32. मतलब mixture हाँ, और चलो enough at to least like- 28, yeah. 29 would have Yeah. worked. Yeah, not a struggling No, person. it's like, not not struggling about also. struggle. It's like वो 10 जगह जाके मुंह नहीं मारेगा. That's not true, honestly. Whatever Yeah. age they are at, they do what they want to do. yeah. But उनको ये भी पता ना कि उनका काम होता है. They are नहीं like- नहीं, नियत ऐसा नियत कुछ वाली नहीं है, बात ऐसा होती कुछ है. नहीं है. उम्र का कोई क्या Honest. बोलते हैं उसको I बट उम्र का कोई इसमें नहीं है. पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ. Oh. Yeah. शादीशुदा भी है मार्केट में बहुत. Yeah. So Don't ask. 2026 में तो हमें पता चल ही रहा है. Yeah, we're exposing man. Yeah. खुद ना हो जाए बस. नहीं खुद का वैसा कुछ किया नहीं है इसने. Good, same. ये काट देना भाई. Okay, so I want to ask you now that also I heard that जब तुम आउट हुई तो हिमांशु also kind of manipulated Kyra to get you out of the show because he was like कि अगर तुम इसको नहीं निकालोगे और दीक्षा को निकालोगे तो मैं मेक श्योर करूंगा कि सारी Next लड़कियां time निकल हम जाए. Threatened her, हाँ. yeah. Yeah. He did that, but again, कायरा के पास अपना खुद का भी तो stand है. She can still like if I was in Kyra's place और मुझे ऐसे बोल रहे होते तो भी मैं उसको नहीं करती. But that's who I am. अभी उसको उस time पे I think she got maybe she was under a lot of pressure also when you're sitting there and she had like thoughts कि अगर इसको शायद लव विला भेज देंगे क्योंकि इसके पास और chances है रहने के तो हम साथ में सब रह पाएंगे. I think she was thinking about all 4 of us together. So maybe she made. So you're wrong giving her the decision. benefit of doubt. I am at this point honestly. क्या ही कर अब सकते क्या क्या ही कर कर सकती हूँ? सकते हैं. अब बाहर बाहर आ ही गए. तो आ अब तो गए. बाहर आ गए. Okay. What do you think about the new hosts of the show? Urfi and Urfi, Nia. Nia और Karan Kundra. Isn't Karan though has always been a host na in so many shows. Yeah, So yeah. we have seen him doing hosting Yeah. bit. Yeah. But Nia and Urfi, they were Urfi. new. So what do you Yeah. have to say about that? Because they are also getting a lot of hate on Instagram. Yeah. Yeah. They are like इसको eliminate करो. Yeah. I think they're getting hate because people They are supporting thinking that Gullu they're a lot, thinking- yeah. they're Yeah, but supporting that's not Gullu true. gang. That's not true. Again, बहुत सारे एपिसोड जब एपिसोड एडिट होता तो बहुत सारी चीजें कट जाती है. जहाँ पे वो जो रॉन वाला सिचुएशन आया था तो ऑब्वियसली निया ने और उर्फी ने बहुत बोला था कि गुल्लू दैट्स नॉट राइट एंड देन देयर वाज आल्सो अ कमेंट व्हिच गुल्लू पास्ट. आई थिंक अनुष्का को या निहारिका को निहारिका को कुछ उसने बोला था और उस पे भी बस्ती की बस्ती की something, what is हस्ती that? समथिंग हाँ. समथिंग हस्ती की बस्ती समथिंग समथिंग व्हिच मींस समथिंग आई डोंट नो. It's not good. So Nia like yelled at Yelled at him. him. You're like, what the
what are you saying? Do you know what that means? How dare you say that to a girl? You can't say stuff like that to a girl on national television. So he did apologize, but नहीं, ऐसा मतलब नहीं वैसे भी है. नहीं बोलना चाहिए नेशनल टेलीविजन पे. Yeah, क्या but कि घर में बोल रहे हैं बस टीवी पे मत बोलियो. No, but again वो एक बात आती है ना कि आप नेशनल टेलीविजन पर हो, आप ऑलरेडी रोडीज के विनर हो, तो वो आपका इंप्रेशन बहुत गलत बताता है. तो बहुत डांटा था, लेकिन वो एपिसोड वो आई थिंक वो कट आया नहीं है, एडिट में दिखाया नहीं गया. बट Nia and Urfi were not biased. They were Yeah, not they biased. were not They biased. always If they were used to biased, they wouldn't have given me shit, na. Yeah, they gave everybody gave बराबर. everyone shit. Everyone. Whoever did something wrong, they were like, don't do it. But वो eventually episode में आया नहीं, तो I don't think so कि उनका कुछ ऐसे fault है, वो लोग favor में थे या ऐसा कुछ है. But yeah. So do you think the makers were biased because they were supporting the roadies contestants more? Now that you're seeing the I episodes. think they were kind of supporting Niharika thoda here and there. How? A little bit. There is this one episode जिसमें कायरा को पूछा होता है कि you tell कि कौन नहीं perform करेगा. 3 जन would not perform today. And Kaira had chosen कि Niharika, Asmita और Kiona would not perform. And then next second they're like, okay, only these 3 will perform now. Yeah, that was a twist. And then जब भी मेरा auction वाला था, He is so good, bro. वो बोलते हैं रुक जाओ इनको करने तो उसका हंगामा भी हाँ, दिमाग करेंगे. then there was another episode जिसमें auction करना था हमें immunity के लिए, ठीक है. तो सब लोग सिर्फ 1 2 3 बोल के that's it, you make the auction and it's done. तो उर्फी and Nia were purposely asking, मैं और निहारिका एक जगह, we were against each other. They kept pushing Niharika. I was done. I was like third पे आने वाला था, and they're like, Niharika, why don't you try? Why are you not buying? Why are you not putting money? Why are you not putting? You're not supposed to do that. Okay. You're not supposed to push one contestant to do it because it's just 1 2 3. That's all the time you get to actually make a decision. You're not going to sit there and think if you want to make a decision. That's not how it works. But I feel like कि निहारिका को इसलिए they were pushing क्योंकि निहारिका के पास I think 13 या 14,000 split coins थे. नहीं थे. She had. Kiona was lending it to her. Okay, maybe lending it, lend. Lending उसने लिया. उसने अगर लिया भी था कियोना से तो भी she had split coins. If I'm taking split coins from you, अगर मेरे पास 6,000 है, मैं तो 6,000 ले रही हूँ, तो मेरे पास 12,000 है, तो मेरे पास है. और वो लेकर भी अगर नहीं हाथ ऊपर कर रही है ऑक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली जो सामने लोग इतना टाइम जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे ही ना कि क्यों नहीं कर रहे हो. तो आई थिंक दैट वाज द रीजन. बट निहारिका का कुछ अलग ही गेम प्लान था कि उसको कब वोट कर, मतलब कब ऑक्शन में अपना हाथ ऊपर करना है, और वो भी हमें पता था. कब? She wanted, I think, Khushi to spend all her All split my coins, money, all yeah. her money, and then later she will, put her hand, like she'll raise her hand कि अब मैं करती हूँ. Okay, that was her strategy. That was her strategy. Why do you guys hate Niharika and Asmita so much? I don't hate her. I was with them. We were in the same alliance. I don't hate Okay. them. Like your group. Okay, the thing is कि हम पहले सब friends ही थे, but Niharika picked fights with all 4 of us individually, which is not shown. And she has given हम लोग को बहुत सारा गाली दिया है उसने, and she's been extremely rude and way below the belt. Way below the belt. उसने कायरा को बोला है कि तू बुढ़ी है, अपनी एज नहीं बताती है. Then she's said a lot of shit to each and every one of us, and it is way below the belt. और then we can't be associated with each other basically. Okay. और वो सब पहले वो अस्मिता की फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं थी. Before she fought with us, वो बहुत उसके बारे में आके बुराई करती थी. But the moment we fought, she became friends with her. Okay, so तुम ये बोल रहे हो कि it's a well edited show and उसमें से Yeah. बहुत सारी चीजें काटी गई. Even हाँ. Gullu's part was not shown. But ये लग रहा है कि that you are ganging up on these 3 people like Ron, Asmita and Niharika. तुम लोग सब मिलके चढ़ रहे हो, गाली दे रहे हो, अजीब चीजें बोल रहे हो, तो जिसकी वजह से you guys are also Are getting a looking lot. bad, Yeah. honestly, right now. But no, that was not the case. We were actually friends. But जब हमारी झगड़ा हो गई, फिर उसके बाद we just couldn't. So are you in touch with Niharika now? No. I was apparently, but show के बाहर आने के बाद we followed each other on Instagram, and then we exchanged our numbers as well. I asked her for my birthday if she was in town or not, because उसने मुझे बोला था when we were inside. उसने मुझे बोला था कि वो town में ज़्यादा रहती नहीं है, she goes out and stuff. So I was like, are you in town? I'm celebrating my birthday. I've booked a villa and all stuff. She was like, I'm not here. And cut to next, I see एक following मेरी कम हो गई है.
I'm like फॉलोवर्स तो कम होता तो समझ में नहीं आता, बट फॉलोइंग कम हो रही बिकॉज मुझे याद रहता है मैंने कितनों को फॉलो किया. इट्स 154 नाउ, तो मुझे याद रहता है. तो तभी I तो पूरा I follow the whole गांव. It's 1400 people. yeah, so she unfollowed me and she removed me, and I didn't understand why did she do that, but it's just all of a sudden वो रैंडम चीज हो गई कि आप नेक्स्ट डे मुझे अनफॉलो कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, बट मैंने सोचा नहीं कि मैं मे बी शायद ये भी मूव हो सकता है कि जस्ट बिकॉज शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ अप्रेजेस बाय अ लॉट ऑफ पीपल कि तुम लोग इतना गैंग अप करो, तो वो दिखाना चाहती है कि यार ये भी शायद उनके साथ थी, But I तो was और with प्यार them. मिलता है. No, ऐसा but कुछ I होता was- है ना But स्ट्रैटेजी she रियलिटी was शो with में. them I was with them only. since हाँ, the तो अभी start. अगर अनफॉलो कर देगी तो लोगों को लगेगा कि अच्छा इनकी भी नहीं बनती है. निहारिका और अस्मिता को सब हेट कर रहे थे, हाँ, समथिंग लाइक हो दैट. सकता है. मैंने तो बाकायदा निकलते वक्त जब मेरा डंपिंग वीडियो लिया गया, द डंपिंग इंटरव्यू, उसमें हामिद आस्क्ड मी कि आप क्या चाहते हो, आप अब डंप हो गए हो तो आप क्या चाहते हो कि आपके कौन से फ्रेंड्स जीते. ऑब्वियसली प्यार वेला में मेरे 3 दोस्त थे और अभी भी है, अनीशा, सौंदर्या एंड सदफ, एंड आई डिड टेक अस्मिताज एंड निहारिकाज नेम एज वेल because they were my friends too. And a night before I got dumped, बहुत random सी चीज़ मेरे साथ हुई and I was crying the whole night. They were there for me. निहारिका especially, she was there for me and she was like तो मेरी छोटी बहन जैसी है. तो वो random जो चीज़ हुई है that she unfollowed me and she removed me without any explanation, और maybe मैंने ऐसे कुछ किया हो जो उसको बुरा लगे. I don't know. आएगी पॉडकास्ट में पूछ के बताती हूँ. Please. Okay, so I'm gonna give you. I'm not gonna give you names. You just have to tell me who will you kiss, block or ghost from all the boys. Splitsvilla boys? नहीं, मेरे बॉलीवुड वाले लड़के. Please. हाँ, उसमें है ऑप्शन. Please. Yeah. उसमें है ऑप्शन, but unfortunately the splits boys. Yeah. Split boys. Okay. ठीक है. Yeah. Let's do it. Who wants to go first? She'll go first. Okay, fine. I'll go first. दीप्तांश. No. अब उसने दीप्ता, मुझे you? बेवकूफ बोल दिया है, अब नहीं हो पाएगा यार. अब तो नहीं. क्या हो गया? क्या पता किसी का टाइप भी होता है डम लड़की. I'm not saying that you're dumb. किसी का टाइप भी हो सकता है. No, I'm just joking. No, you don't. It's the different perspective that they show, but just now that I'm talking to you guys are very smart and intelligent. ये मेरे को समझ आ रहा है, but बहुत सारी चीजें अलग दिखाते हैं वो लोग. Yeah. So it's okay. Yeah. ठीक है. Kiss, block and ghost. Do you give me options of No, guys? no. Oh my god. तो मैं किसी को भी pick कर सकती हूँ. Freedom. I would need some time. आजादी. Oh shit. Splits के लड़कों, प्यार वाला, पैसा वाला, ऐसा कुछ या कोई भी. सारे कोई भी. लड़के. सारे लड़के. क्या पता अभी मौका मिल जाए. मुझे वहां तो नहीं हो पाया. Wish you. क्या हम बाहर आके कर सकते हैं? यार मैरिज मटेरियल कोई था ही नहीं वहाँ पे. Yeah, ऑनेस्टली true. इट्स टू. कौन था मैरिज मटेरियल? मतलब किस उसको ही करोगे जिससे शादी करोगे? नहीं नहीं नहीं. किस इज में दीप्तांशु. I bet she's getting a call from her. Yes, Just go फिर for it, इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आएगा कि फिर No, तुम्हें no, I समझ think नहीं आ रही है. समझ नहीं, एक बार मैंने बोल दिया उसको मैसेज मत करो, अभी तुम्हें चुम्मा भी उसका लेना बोल रही है. हूँ, हाँ? तुझे शादी भी उसी से करनी है? नहीं शादी नहीं करनी है. She can Kiss get करना है, married to kiss, him. Yeah, kiss. she can get married to him. It's Okay. fine. I'll get married to Ron, bro. Ron is really nice, really sweet. Okay. Yeah. Block, I would block Vishu. Okay. Yeah. Yeah. You go first. It's kiss, marry. It's kiss, block and ghost. अच्छा. Oh wait, then I But said कुछ और. ठीक है. हाँ, marry भी हमको पता चल गया. So we'll make it kiss, block and marry. Okay, so I'd kiss Ron. Oh, you'd kiss Ron. Oh, Yeah. he is in Mumbai now. We are friends. अस्मिता तो इसलिए. Girls after मन में शादी करने के बाद best friends. We're just friends. Yeah, we're still I friends. want to marry him, but we are just friends. We are just friends. I want to have his kids. We're friends. Marry, obviously, जो मेरा शौहर है, Oh OG my शौहर. God. No, he dumped you twice. Come on, learn from your Wait, mistakes. I don't have any option. I don't want to get married to any dumbos from Splits. So Are you think talking Yogesh is about- a green flag or a red flag? Red flag. no, it's. I think he's a mixture. And you are like okay marrying him. No. बस क्यूट है तो कर लूंगी बस. I mean, गुड लुक से काम चला लूंगी. yeah, good looks. कि But कब तक अंधेरा करके सोएंगे यार. no, can I change? Can I change? I'd marry Arav. My connection.
connection. Arav is nice. Yeah, and The yeah, accent was really nice. No, I think he's also a nice he's a very person. nice person. He's a very Yeah. sweet guy. Okay, Yeah, and Block Gulu, for sure. not your type. Not my type. Are you friends? Thank God, I'm not. Who are you friends with now? I am friends with Ron, Mohit and I. We talk occasionally. लड़कों में और कौन है? और कोई है ही नहीं। योगेश, I met हिमांशु once जब मैंने योगेश के साथ वीडियो बनाया था। आयुष, टेन, and yeah, I think that's it. और लड़कियां तो है। Okay. Yeah. So अभी उसने 2 बार तुम्हें निकाला योगेश ने, and then now you're making reels with him. Yeah, it's because no, I just wanted You're to. too honest. Yeah, I don't like how it should lying. be. Yeah, I don't like lying. Yeah. But again, the thing is that मुझे शो जो एपिसोड्स चल रहे थे मुझे उसके हिसाब से अपना कंटेंट को ग्रो करना था obviously. मैं आर्टिस्ट स्प्लिट्सविला में एक स्प्लिट्सविलन होने के पहले कंटेंट क्रिएटर हूँ तो ऑब्वियसली उस माइंडसेट से भी चलूंगी Yeah. सो आई वाज लाइक कि मेरे पहले एपिसोड में जो वो बहुत फेमस हुआ था डायलॉग कि ओ ये मेरा शौहर बनेगा क्या बनेगा मेरे बच्चों का बाप सो आई वाज लाइक कि एक वीडियो बना लेते हैं डंपिंग के पहले ऑब्वियसली क्योंकि डंप कर देगा तो फिर मैं गलत दिखूंगी क्योंकि मैंने डंपिंग वीडियो में उसके बारे में बहुत गलत बातें बोली थी सो या वही रीजन था कि But मैंने I बनाया। guess when you're out of the show, वो Yeah. शो था ठीक है, Yeah. फिर उसके बाद आप जब बाहर आते हो तो आपको it's not necessary that you have to live your life according to the episodes because Yeah. then it will look like that you're a fake person. Oh. क्योंकि तुम्हें याद है कि उसने तुम्हें डंप किया, you hate him but then you're still making videos with him just for the views. और फिर जब डंपिंग वाला वो आएगा तो people will see what you have said about him. Yeah. So you will eventually look very fake and like a bad person. या आई नो उतना अगर दिमाग मैंने चला लिया होता तो मेरा शौहर कोई और नहीं होता तुम्हें शो नहीं जीत जाती या तो चलो ठीक है, लड़कियों में थोड़ा हम लोग दिल से सोचते हैं ना, Exactly. दिमाग से नहीं सोचते because Yeah. why to use it, you know, when you have your looks. Okay, let's play some games now. Yeah, okay. Let's make it fun. Yeah. मतलब funny है और fun बनाते हैं इसको, spicy करते हैं. ओके Okay, now I'm going to name the boys. You have to tell me if he's a green flag or a red flag. ओके Okay. सबकी बैंड बचा दूंगी. Okay. First one is Saurabh Bedi. Red flag. नो इज अ ग्रीन फ्लैग Why? आई थिंक he's mixed because he has a girlfriend outside Then he's a red flag. You can't say it's but mixed. but I think वो He ये also has a girlfriend outside. of yeah Yeah. it's out on the Yeah. internet मैं नहीं हूँ, मैं को नहीं पढ़ रही मैं Reddit यार, कौन है अब इसकी गर्लफ्रेंड? I don't know her I but think she's they've a been model. together since 9 years. Yeah but And no, why that's is he it, flirting with Sadaf then? But they look so Is he? cute together. yeah they Oh, look so yeah. cute Yeah. yeah वो रब ने बना दी जोड़ी हाँ. वैसा है उनका Yeah. So according to me, he's a red flag. no Just because he was dating outside of the show. हाँ, मतलब it's a big deal. Yeah, of course. Honestly. I mean, if your girlfriend is okay with it, कि आप, I'm just giving my point of view. ठीक है. If I am dating someone and I am famous, for example, and I want my guy to be, you know, seen for वो उसकी personality के लिए या उसका जो भी talent है उसके लिए वो दिखे. तो मुझे पता है कि वो मुझे प्रॉमिस करके कुछ जा रहा है कि अंदर वो सिर्फ फॉर द शो फॉर द यू नो फॉर द कैमराज हिल डू ऑल दैट लवी डवी शिट बट एक्चुअली में वैसा कुछ होगा नहीं एंड आई ट्रस्ट हिम बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर 9-10 years सो आई थिंक इट्स Yeah, फाइन fair point. ठीक है. इट्स Makes फाइन sense, ऑनेस्टली yeah. इट्स फाइन बिकॉज अगर वो बाद में से कहना कि तू तो मेरे कंधों पर चढ़ के इतना आगे बढ़ा है वो चीज़ दो नहीं की चाहिए बात नहीं करेंगे यहाँ पे. yeah so I think yeah he's mixed Okay, nice. Yeah. I mean if your partner trusts you. Yeah. then Yeah, it's exactly. definitely okay. क्योंकि आप कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि स्प्लिट्सविला में लोग करियर बनाने जाते हैं. Obvious. fields Yeah. like this, yeah. योगेश रावत. I already said it mixed I feel Yogesh also. apart from him dumping me he's a nice guy mixed. I think he's cute and all, but he's a little arrogant. So I don't. That's not a no. That's not a thing Yeah. for me. I like guys who are sweet and nice. he is sweet it's just that कि तुम्हें उसके साथ time spend करना रहता है वो चीज़ कितना? so when we were together in प्यार विला हम कभी उतना जेलअप कर नहीं पाए because he chose आकांक्षा and I was like मुझे नहीं चूज किया
तो मैंने मेरे से ज़्यादा बात नहीं हुई थी एंड देन ही डम्प्ड मी एंड आई फेल्ट बैड बिकॉज उसने मेरा नाम लिखा था एंड लेटर व्हेन ही केम टू प्यार विला वी हैड मोर टाइम टू स्पेंड वी यूज्ड टू टॉक हैव फन ईट टुगेदर तो मुझे ऐसा पता चला कि नहीं ही इज़ अ नाइस गाय एंड देन व्हेन वी केम आउट ऑफ द शो आल्सो तो Yeah, so he could be. I just sweet guy, yeah. जितना मैंने time spend किया, I think he was a little arrogant. Understandable. Okay. Yeah. Himanshu. Red flag? He had a hand in me getting dumped, so red flag. Yeah. I mean, तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के जा रही है और तुम झूठे मुंह बोल भी नहीं रहे हो. मैं चले जाता हूँ. No. Yeah. Did you see that? Yeah. Like, But I think वो 2 दिन हुए थे ना, 2 या 3 दिन या मैक्स टू मैक्स 4 days. उनका प्यार तो स्टार्टिंग से ऐसा था. हाँ. I mean वो दीक्षा कितना रो रही थी. Like she Yeah, was literally. actually Yeah, like yeah, I get it. I very, respect very that. sad. But then I just wanna say कि वो भी splits तब करना चाहता था because I know him. ठीक है? Yeah. I'm not saying that he है but वो पिछले सीजन से करना चाहता था स्प्लिट्स तो उसका वो सपना था अगर फॉर एग्जांपल मेरा सपना है और मेरा बंदा डंप हो रहा है तो मेरे मुंह से भी नहीं निकलेगा यार मैं चली जाती हूँ क्योंकि मैं अपने करियर के लिए भी आई हूँ यहाँ पर honestly fair point. Yeah. Yeah. तो आई एम गोना गिव हिम दैट Yeah. बोलने में क्या चाहता है? बट क्या पता वो फिर बोल दे हट दाजू चल भाई जाओगे ना आप। But I feel like Diksha was too attached to Himanshu. बहुत अटैच थी वो हिमांशु के साथ और अगर हिमांशु नहीं बोल के चला भी जाता तो दीक्षा वो अकेले नहीं सर्वाइव कर पाती या आई मीन शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ऐसे पर्सनालिटी उसकी अच्छी है बट अगेन वो ऐसे मतलब उसका कनेक्शन किसी के साथ बनता नहीं है इवेंचुअली एवरीबडी वेन देयर कुछ लोग फेम के लिए गए और कुछ लोग एक्चुअली में प्यार के लिए गए और मैं और दीक्षा स्टार्ट से साथ में ही थे तो शी वाज लाइक ओ आई डू वांट टू फाइंड समवन प्यार ढूंढना है बट उसका भी बहुत कुछ बाहर पता चला है सो हाँ, even she has a boyfriend as well. but I think she did clear it out that Yeah? they were it just was like content making creators content they together. were Okay. making content So do you think their relationship is like very convenient or they are actually dating Himanshu and Diksha? they are I think together, they're guess. seeing each other at No, least. they're There's together. something. Okay, I don't follow their content as such. I but don't follow their content either but we met when I went to meet Yogesh जो वीडियो बनाने के लिए they were together and I think they are still dating क्योंकि उनके इतने वीडियोस आते हैं और एक्सप्लोर पे तो आ ही जाते हैं इंस्टा पे अगर आप स्क्रॉल करते हो तो I think they are still dating But they're not there for the content. They're actually seeing each other. maybe who knows Because मुझे तो उसने बोला है कि प्यार हो गया है दीक्षा बहुत अच्छी है अब But that's cute. If that is the Yeah. truth, then it's cute. yeah it is indeed yeah I've been said that so I don't know. yeah understandable Yeah. Diptanshu. red flag I never found Only him because cute. he's cute, I would say green flag. Only because he's cute. ठीक है यार लुक भी तो yeah ठीक है ना because आपको भी cute लगा ना वो आपको भी cute लगा ना वो नहीं मेरे को तो पॉडकास्ट में बुलाया ठीक है ग्रीन हो भाई तुम सब ग्रीन हो ओके गुल्लू red flag she didn't take 2 seconds He didn't even Wow, take so a that's split like second. गुल्लू गुल्लू यहाँ आगे next हाँ next I think he's a red flag. oh thank god Why? No, I'm not going to say he's a green flag. Yeah. मुझे why पता are है you he's saying that because I think उसका दिमाग more game perspective से I don't think he's interested in making a girlfriend, going this that. I don't think that's where his head is at. yeah Yeah. do you feel that he like disrespects women kind of I mean उसका इंटेंशन मे भी उसका इंटेंशन नहीं होता होगा डिसरिस्पेक्ट करने का बट वो ऐसी बातें बोल देता है जो वो पता ना कोई अपने अपने धुन में रहता है तो बोल देता है I don't think he has emotional maturity to understand what's right and what's wrong at times. yeah So he just says things and he just thinks that it's funny out of like, yeah in that way. But can't always be it's funny. not मुझे like लग रहा है that. गाली इतना नहीं चुभेगी लड़की को बट सरोजनी की मॉडल बोल दोगे तो ज्यादा चुभेगा Honestly, that was very funny. It was, but It was very funny. वो बहुत triggering है ना It आपके is very लिए कि triggering, मेरे को obviously. गाली दे दे चलेगा because वो मैंने सुनी हुई है but Yeah. मुझे ऐसी कोई चीज बोल दे जो out of nowhere I don't know how to respond to exactly that I don't have any comebacks bro what is Sarojini खत्म की हो मॉडल गया और 4 लोग हंस भी दिए उस बात पे exactly Yeah. so I felt bad for Niharika at that point That was sad also at the same time. yeah obviously it was sad I mean yeah, Dane I'm so sorry Dane okay till the time he was with Sadaf he was a green flag but I think I don't वो think you're थोड़ा supposed- डामाडोल हो गया था उसका तो when he came to पैसा विला हाँ, red flag. हाँ, हाँ. थोड़ा थोड़ा he डामाडोल. has
said things here and there कि I'm here not for love, I'm here for the show, this Yeah, that. even he और- said that to me when we were having a conversation for the very first time. Because he was like, oh, मेरे 2 past relationships रह चुके हैं ये ना वो, but you never know, I might find someone. And then उसका और सदफ का तो बहुत ज़्यादा ये हो गया था. हाँ. क्या मतलब Serious था, like Yeah, they were like kinda serious and like dating in love with each other situation wouldn't like that. say That's love. what Sadaf would Sadaf is show. a kind of person. She is a very sweet person and she gets attached too easily. जब हम किसी के साथ attach हो रहे होते तो हमें ये चीज़ पता होती है कि सामने वाला हमारे लिए सही नहीं, हम थोड़ा अपने आप को पीछे कर लेते हैं. But Sadaf, I think she lacks that and she was very much attached to Tain. okay so now they are not dating No, I'm not sure. no, they're not dating. why I don't know. मतलब Instagram पे तो I heard that Dane switched his connection and went back to Anjali. Is that true? I don't think so. No. Anjali निकल Anjali गई. got dumped. She got dumped before me, so yeah. Okay. Yeah. No, after me, I guess. She got dumped after me. After you, Yeah. but before me, right? Yeah. So, yeah. That's a win. That's a win. That's a win. इतना बोल रही थी कि मैं बहुत strong हूँ. I saw her Rudy का audition. I am not a strong performer either, but मैं इतनी नहीं फेंकती. अगर मुझे पता है मैं अच्छी नहीं हूँ तो नहीं हूँ भाई. That yeah. Harshit. I think he's a green flag. हाँ? Yeah, dude, he's nice. He's actually nice. He's just dumb. But He's looking at his gentle, profile, he looks he's- so like raw. He's like gangster type shit. No, but he's why a are you saying kooky that? person. He's like kind, soft spoken, like that. He's a very sweet guy, but I feel like I have a sister. Okay, she's 4 years old, and I feel like उसका brain ज़्यादा developed है हर्षित से. You didn't just say that about I him. did. Good one though. Yeah, because he's But I'm not gonna laugh. I'm a sweet person. so you mean I'm a rude person? No, it is what it is. I mean, आप एक जगह एक बात बोलते हो, आप दूसरी जगह दूसरी बात करते हो, आपको खुद को ही नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हो. But he's a nice guy. He's a very sweet guy. I think it was his first reality show. तो Yeah. उसको नहीं समझ आ रहा होगा क्योंकि जैसे ही उसने जब बोला टेन को, bro, you tell me. I literally felt bad for him क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो नया है, पहला शो है Yeah. उसका, तो उसको नहीं Little समझ आया वो क्या nervous, बोल रहा Yeah, understandable. है. Yeah. Benefit out. That was funny. Okay, मैं देख लेती हूँ क्या क्वेश्चन और मैं पूछ सकती हूँ जिससे हमको आएगा. Okay, now that you are out of the show, you know that winners कौन हो सकते हैं. मतलब हो फिना- सकते हो हैं, सकते पता है. हैं. हाँ. So do you wanna take the names कि तुम्हें कौन लग रहा है कि winner होगा या is deserving to win the show? I think Kyra is deserving to win the show. I think Saundarya. अच्छा लड़कियां जीत रही हैं. It's a couple show ना. It's a couple Take show. take a But name of the again, pair. we मैं don't know support what they're Kyra paired को up कर with. रही हूँ. Okay. That's what I'm trying to say. Okay, I don't know who she is paired up with end तक, but whoever wins, I want my friend to win. Saundarya obviously because I know she's a very strong person and I will always support her. Go girly. Go girl. Yeah, I like her. She's a baddie. She came to my birthday party also. Yeah, I know. तुम लोग को ही बुलाओगे. मुझे पता नहीं था that you guys live in Bombay. Yeah. But हमारी बात भी नहीं हुई थी. Yeah. अब बुला लिया. Next Our birthday. next birthday. What was that Mohit situation? So basically मोहित टास्क नहीं खेल रहा था तभी. वो बाजू में खड़ा था, उसका टास्क हो चुका था और हम एक दूसरे के बलून्स लेकर ग्रैब करके फेंक सकते थे. तो मुझे नहीं चाहिए था कि इसके भी बलून्स मेरे फ्रेंड्स पे जाए क्योंकि दीप्तांशु आके ले रहा था. So I was snatching the balloons and I was bursting them. Every time you're saying balloon, it's so funny. Yeah. इसके balloon. Sorry. No problem. Let's focus. Yeah. So I wanted to burst all of them. तो उतने में Mohit is like holding the Balloon. holding the balloons and he's like, don't take them. And I was like, मैं तो लूँगी. And then he just out of nowhere he just snatched my hand and I was like, why do you have to touch me? Am I touching you? Am I holding your hand telling you no, please don't touch the balloons? Huh. Why are you disrespecting my boundaries when I'm not disrespecting yours? It's not cool. And that was the only thing that I had said कि मैंने कभी I don't know, everybody is saying women card खेल रही है. कोई भी होता bro, if she would come and she would snatch my hand, I would say the same thing to her, bro, don't touch me. Yeah. Like don't But touch you have me. to accept that you cheated. I cheated? Yeah. What so, did I do? So the task was basically हम attackers को attack करके sweat coins जमा करने थे जो भी
बलून्स फोड़ के मिल रहे थे स्प्लिट कॉइन्स, वो हम चारों को मिलते हैं। आई थिंक वो हमें पता था कि नहीं पता था, हमें वो नहीं पता था। सो ऑब्वियसली आई वांटेड टू सपोर्ट माय टीम जो पहले गई थी, बट आई वाज स्टिल अटैकिंग कि मैं उन्हें अटैक करूंगी, बिकॉज अगर मैं उनके साथ भी हूँ तो इन दी एंड इट्स लाइक कि भाई मुझे भी अपना गेम खेलना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि ना मेरा कोई कनेक्शन है ना मैं किसी की प्रायोरिटी हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे स्प्लिट कॉइन्स चाहिए खुद को बचाने के लिए, खुद को सेव करने के लिए। वी वर परफॉर्मिंग, मैंने उनको अटैक किया। द थिंग इज जब मेरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा था, एवरीबडी लाइक वी वर 4 अटैकर्स और तीनों के अगेंस्ट मैं थी, तो इट वाज लाइक 3 versus 1। ओके। और जब कायरा ये लोग गए तो मुझे दीप्तांशु पे 1 रुपए का भरोसा नहीं था, एंड आई न्यू कि वो कभी भी फ्लिप कर सकता है या कभी इनके साइड हो गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कि आई एम द ओनली वन हु इज सपोर्टिंग माय टीम, और मैं अकेले अटैक नहीं कर पाऊंगा, और मेरा एमिंग बहुत खराब है। अभी सो गर्ल या मेरा बचपन से एमिंग लेजिट बहुत ख़राब है, तो आई वाज लाइक कि सारे टास्क यही एम वाले ही थे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने अटैक किया। जब बात आई इसकी खुशी की, तो दीप्तांशु भी अटैक कर रहा था, एंड व्हाट शी डिड वाज शी थ्रू ऑल द बलून्स एंड शी बस्टेड देम। So that they can't were see your mine. balloons, right? Yeah. So No, it it was was all everybody's balloon. No, Okay. first it was mine, जो मैंने It was तोड़ा, not फिर like मैंने that. no, it was like No, that. it was not like that. It was So like 4 that. बाल्टी थे, हर 4 सबको लोगों एक-एक के, हर बाल्टी सबको दी एक-एक थी। मिले थे, बट अगर आपका खत्म हो जा रहा है तो आप वो पोडियम पर आकर अटैक कर सकते थे। इट वाज लाइक हमारा अलग, हम चारों का अलग एक गेम था। बट व्हाट शी डिड वाज उसने पूरा फेंक दिया। आई ट्राइड टू कलेक्ट इट, अगेन इट वाज लाइक 3 versus 1, जो एडिट में नहीं आया क्योंकि ये No, कॉन्वर्सेशन the हमारी हुई Tanshu थी। was bursting पूरे time. आई डिड नॉट नो दैट, क्योंकि मुझे लगा था शायद वो गुल्लू के साथ हो जाए। वी नेवर नो, और गेम इतना बड़ा है, द टास्क इज सो बिग, और हम इतना दूर दूर खड़े, बीच में इतने सारे लोग खड़े, तो दिख भी नहीं रहा, और खुद के गेम पे फोकस करे कि दूसरों को देखे कौन अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो उसने बर्स्ट कर दिया, एंड मोहित वाज लाइक कि भाई सिमरन कलेक्ट करो, मैं अकेले कैसे करूँ। इट वाज 3 versus 1। No, it was not. Diptanshu and Kiona were also bursting. I did It was not just see me. that. It was just No. me I who did was not. I did not see that. मुझे लगा था अगेन, आई जस्ट वांट टू क्लियर इट विथ यू, मुझे नहीं पता था दीप्तांशु कभी भी फ्लिप कर सकता था, यू नेवर नो। तो इसलिए बर्स्ट कर दिया। तो आई थिंक वो पहला इंस्टिंक्ट जो होता है इंसान का, अगर आपको कोई पकड़ रहा है तो आप उसका हाथ हटाते हो। तो व्हाट शी डिड वाज, वो मोहित ने द बकेट, मोहित वाज होल्डिंग द बकेट, और इसने पूरा हाथ डाल दिया उसको अपना पॉइंट प्रूव करने में, और बर्स्ट करने लगी, अंदर ही हाथ डाल के बर्स्ट करने लगी। तो आई थिंक पहला जो इंस्टिंक्ट मोहित का था वो ये था कि इसका हाथ निकाल के बाहर रखूं, क्योंकि वो हड़बड़ी में हो जाता। आई डोंट थिंक सो इट वाज डन इंटेंशनली और समथिंग लाइक दैट। तो या Okay. I never said that it was done intentionally. I understand that people का reflex होता है कि I Yeah. want to stop you, Yeah. don't do this, don't do that. I get it, okay. But the next thing you do is, after the task, you just be like, listen, this wasn't intentional. I'm sorry, I'm sure it must have been a little weird for you that I, snatched your hand because it's not nice. I'm sorry, I shouldn't have done that. That's a genuine Yeah. apology. Yeah. I would accept it. I would move on from there. You just start playing your women card. मैंने जो मुझे लगा सही था मैंने किया. This is what Mohit was Yeah. coming and saying. Bro, I'm not gonna accept it. Even if I was, or he was not playing the task, bro. उसका task हो चुका था. वो बस साइड में खड़ा था और वो सिमरन को बता रहा था कि तुझे क्या करना चाहिए. उतने में वो बाल्टी उठा रहा है, वो कर रहा है, तो तू खेल ही नहीं रहा है, तो तू कैसे मुझे रोक सकता है भाई? सही बात है. तू खेल ही नहीं रहा है. गो गर्ली। Yeah. हाँ, क्योंकि देखो यार, अगर फॉर एग्जांपल दैट्स हर स्ट्रेटजी, Yeah, ऑनेस्टली, कि अगर obviously. उसको अपने फ्रेंड्स को बचाना है, अगर वो अपने फ्रेंड्स को बचाएगी तो क्या पता वो उसको बचाए। दैट वाज जस्ट हर स्ट्रेटजी व्हिच आल्सो मेड यू गाइस विन सम स्प्लिट कॉइंस, राइट? नो, No, not that. not that. Not that. जो But भी, हाँ. बट वो शायद ठीक है. तुम्हारी स्ट्रेटजी है। हाँ. इट वाज अलग थी, इसलिए तुम दिखी भी टेलीविजन पे। भाई सेम Yeah. चीज कर रही होती तो क्या पता नहीं दिखती भी दिखती. नहीं। सो आई एम गोना गिव यू दैट। Yeah. एंड आल्सो आई फील कि अगर आप किसी को मार दे रहे हो तो आप जनरली बोल दो सॉरी, अगर आपका वो Yeah. इंटेंशन नहीं था। बट देन यू आर अटैकिंग द अदर पर्सन व्हेन द अदर पर्सन ऑलरेडी पिस्ड at you, and then you're saying women card से तो लड़कियों को चिढ़ ही मचती Yeah, है। no, Why would we obviously, that use was women wrong. card when you have literally like snatched Yeah, my if hand you and been snatched my aggressive hand, towards me? yeah. So ठीक है, मोहित यहाँ आगे सॉरी बोल देना, ठीक है? श्रेया के पॉडकास्ट में आके सॉरी बोल देना। प्लीज, Yeah. थैंक यू। मेरे को ये बताओ कि ये लड़के रॉन को क्यों टारगेट कर रहे थे? I think they thought Ron is a little weak. That's why. So why would you think target a weak person in the game? I think उन लोगों को लगा कि this would be easiest to remove. अभी के लिए जो easy है उसको निकाल देते. That's what they. I think.
That's But what. Arav got dumped. Also because वो निहारिका के साथ था और थोड़ा अलग ग्रुपिज्म चल रहा था तभी के टाइम पे. But they were also targeting Diptanshu. They were also targeting Arav and Ron. मतलब उनमें But से एक कोई Ron को निकलना कैसे लग था. रहा था they are literally going and like hitting him and then he Yeah. literally locked himself inside that bathroom. I think उसने lock नहीं किया था. Diptanshu ने उसको locked लॉक him, कर yeah. दिया था अंदर. It was not Ron who locked himself inside. Yeah. It was Well, Diptanshu. it looked like Ron chickened out because everybody was ganging up on I him. mean, I think he is just a calm person और उसको ऐसे सब stressed environment, I don't think he handles that well. He likes to talk things out और दूसरे side से थोड़ा क्या कर रहा है He's a very निकाल mature बाहर- person. Yeah, he's like Mature. nice and calm like that. So Yeah. maybe he couldn't. It was not his scene, I guess. He's good for Shadi.com, I think. Yeah. Good candidate. Yeah. Not good for Yeah. splits. No. Yeah. Splits में calmness तो नहीं चलती. Yeah. True. तुम्हारे दिमाग का भेजा फ्राई करने में लगे रहते हैं कि कैसे तो बैंड बजा दूं इसकी. Okay, who would you never date outside the show? Everybody. I would not. Honestly. Why? They're not old enough for me. Date outside the show. मैं बुढ़ापे में बिलीव करती हूँ. और maturity और इनके some साथ- money. अब इनके साथ इतना टाइम स्पेंड करके आ गई तो मुझे पता है कि इनके साथ और टाइम स्पेंड नहीं करना. Okay. Yeah. Different people. Different people. Yeah. Next. Who wouldn't I date? को सारे ही bro. सारे कोई एक पूछ लो who would I date? Exactly. That should be the question. Diptanshu. but just because he's dating, she can't. Yeah, do yeah, it. I can't. So now let's just play a game. Okay. Yeah. And this can get you a hamper. Okay. Okay, but only one of you will get it. Okay. So this time you don't have to be like diplomatic. You have to be very controversial. Or just be honest and be rapid with The your way answers. I'm getting trolled right now, I don't know if I want to say more things. Yeah. I mean, troll तो everybody will be trolled for the entire show. तुम्हारे fans भी बनेंगे, वो भी गाली देंगे, उनको तुम्हारे दूसरे लोगों को गाली देंगे. So this is about ठीक है. honesty. ठीक है. ठीक है? Got it. मतलब किसी का connection fake है तो fake है वो. ठीक है. You're not changing No. something. Okay. Yeah. Yeah, you're stating Yeah. facts. You're not judging. Okay. Okay. यही बोल के मैं गॉसिप करती हूँ. Okay. So जिसका मुझे लगेगा कि Answer honest is था, better. Yeah. dramatic नहीं था. Yeah. Yeah. We are doing a Karan Johar moment right now. Yeah. We have a very cute Coffee hamper with for you Shrey. guys. Okay. So, Shrey? Coffee with Shreya. yeah. Shrey भी चलेगा, ठीक है. Okay. So you have to be rapid and fiery. Okay. Got it. Ready? Yes. Okay. Fakest connection. Yogesh and Anushka Akansha. and Mohit. Yogesh and Akansha. Anushka and Mohit. Somebody who has a girlfriend or boyfriend outside. Diptanshu. You guys will have to share it then. Worst dressing sense. Suzanne. Anushka. Who hooked up in this show? I don't Oh know. my god. I don't know that. Or do I? I wouldn't know. I don't know that. Who played the just say dirtiest back. game? No, Sorry? Who played the dirtiest game so far? Diptanshu. And Gullu, I feel. Gullu also. Okay. Who would be exposed if cameras were 24/7? Gullu. Gullu. I am taking that hamper. Also Niharika, dude. She's playing a good game. Yeah. Look at her. She's getting so much love right now. She's used her brains. That's why. Yeah. Yeah. But no, what did you ask? The question was something. Who would be Would be exposed if exposed. cameras were 24/7? Yeah. So if she's playing a good game, तो कैसे expose होगी? तो अगर cameras 24/7 हो गए तो she would be exposed. हाँ, मतलब उसका Yeah. पूरा game दिख जाएगा. Yeah, She's yeah. playing And out Kiona. there. Oh my god. Oh How my did I god. forget her name? He Kiona. has such a good game. I sorry Gullu, तो इतना Yeah. बुरा नहीं है. भाई पैसे दे के जो लड़की खरीदी है. I swear. So good Kiona. strategy. I take my answer back. It's Kiona. Yeah. हम भी कर सकते हैं ना, पैसे दे खरीद लो मत को. I wish. तो मैं तुम्हें स्प्लिट कॉइंस दूंगी और तुम्हें जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी. तू मुझे रिंग भी दे हाँ. Which connection would break immediately outside the show? Anushka and Mohit. No, they're still together. Wait till the episodes are done, na. मुझे तो नाम याद नहीं आ रहे. Okay. Sadaf and Tena not They're together. not together. Na? हाँ. I think it's oh god, I think it's Himanshu and Diksha. One Or the heavy couple. One couple who's actually dating outside the show. Anushka and Mohit and Diksha and Himanshu. Diksha and Himanshu. Not Anushka and Mohit, for sure.
Who would sell their loyalty for the least amount? क्यों ना? क्यों ना? किसको देना है भाई, आप बताओ मुझे. Okay, we have hamper, but you guys were honest, I think. Yeah. So I'm also very confused. Oh my god. So would Take you your time. be चिड़िया उड़ी है, rock paper scissors. would you be kind enough to like share it? Yeah. मुझे Yeah. पता होता कि दोनों ही दोनों में कुछ रख देती. But चलो, so can we get the hamper please? क्या आगे hot तो लगाओ. Hot. Yeah. Hot. Yeah. Come on, car. अच्छी चीजें मैं लेने वाली हूँ इसमें से. देखो लड़ना मत. Yeah. But Thank you so much. Come Thank hold you. it. This is for Thank both of you. Thank you. I had no fucking idea that you guys would be so good. Oh, Thank okay. you so ठीक है. much. Thank We're you so good, much. so- But we please will share go it now. Yeah, of we'll course. share. We'll आधा share it. परफ्यूम रख लेना, आधा बॉडी साथ नहा लेना, बॉडी वॉश, लिप अब ग्लॉस. साथ ही नहाना Whatever. पड़ेगा और कोई तो मिला नहीं. Yeah. I mean, I think जिस हिसाब से हमारा कंट्री आगे जा रहा है, अभी लड़कियों को डेट करना पड़ जाएगा. I wish. क्योंकि Only लड़ if I was जाओ not the straight. choice. Only if I was not straight, I Yeah, would have only gone if I for had a a pretty choice. girl. नहीं, soon Pretty we'll- girl. Soon we'll have to like switch to that. Okay, Yeah. so is there anything you guys want to say or about your journey? This is the only time that you have. कुछ कहना चाहते अपने fans को? यार मुझे तो That's ऐसा your लगता है camera. यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सपोर्टर्स से ज्यादा प्यार करने वाले उससे ज्यादा हेटर्स हैं. Plus Keep hating one. me. Love you all. आपके हेट Yeah. करने से मुझे व्यूज मिल रहे हैं. आपके ज्यादा वो हेट कमेंट करने से मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है, तो इट्स अ विन फॉर मी. I think my brain is definitely in my ass. Guys, y'all have actually gotten it right. So please keep commenting that on my pictures and my reels. I am getting good engagement as well. Thank you. Are people saying that your brain It is is in my ass, yes. At least you have a good ass. Yeah, that is Yeah. making I your did ass bigger. post like a picture of my ass and I did like put like, you know, since y'all are saying my brain is in my ass. तो बोल And दो ना, after that- उसी दिमाग से पाद मार दूंगी, उड़ जाएगा साले. Okay, so we'll talk about the trending things right now. I'll keep this. Yeah. Now the new reality show is also coming up. The 50. Yeah, the 50. Yeah. Do you want to say something about that? What is it about? I don't have I mean, any there are 50 idea. creators and Yeah. people who are like, And I've heard कि आप में से and I've heard जो 50 contestants में से जो जीतेगा उनके एक Fan fan को को पैसा 50 मिलेगा. lakhs मिलेगा. I have few Oh. friends inside. I mean not friends, but yeah, I know few people who are inside the show, and all the very best to them. I hope you guys rock. Win it. Yeah. Rooting for Hamid. काट देना, ठीक है ये part. So I heard before the swap happened, हर्षित ने ये डोम में बोलकर निकला था हर्षित कि ओह आई थिंक सिमरन मेरी आइडल मैच है. एंड व्हेन ही एक्चुअली गॉट द चांस ऑफ पेयरिंग अप ईदर विद मी और हर, ही चोज क्यों ना? Why? आई डोंट नो. क्योंकि उनकी थोड़ी बन रही थी. They were actually hanging out together. They were eating lunch together. They were walking in the villa together. So लोग दोनों सेम है इसलिए हाँ, दे आर लाइक हाँ. उनका ब्रेन सेल This साथ में one चलता है. time I met Harshit, ठीक है, for the first time when I met him, I was talking to him. मैंने पूछा कि कौन सिंगल है यहाँ पे ये वो, तो मैं उससे बात कर रही थी. So then I was like मुझे थोड़ा लव विला का टी बताओ. तो he is like क्या, कहाँ है टी? या ही इज लिटिल वेरी. कहाँ मैं है बताऊं? टी? मैं करूंगा. मैंने बोला था. ही इज लाइक दैट. Yeah. वेरी स्लो. Perfect ideal match. Yeah, they are the perfect couple. Perfect. So वो ideal match बने कि नहीं? उसके पहले क्यों ना चली ना गई walked out of the show. Yeah. Why? She left the show. She left the show. Why? Somebody Because bullied her, no? No, because उसका game plan बाहर ऐसे आ गया था. तो हाँ. Yeah. So That she the pretends day- to be dumb in front Yeah, of people. no, She's not dumb. actually She dumb. pretends to be, you know, she acts like an innocent someone. Yeah. मैं बहुत बेचारी हूँ. She मेरा does that, yeah. मेरा दीप्तांशु और क्योना और अस्मिता का डेट था. सो दीप्तांशु एंड आई वर सिटिंग इन द पूल ऐसे, ठीक है. तो वो पीछे से आती है एंड शी थ्रोस कैंडल्स इन द पूल एंड आई एक्चुअली गेट स्कैर्ड कि भाई ये मुझे मार देगी सच में भी, क्योंकि ये दीप्तांशु भी उसका कनेक्शन है एंड शी इज लाइक तू मेरा कनेक्शन है, मेरे साथ ही Yeah. रहेगा एंड शी लाइक दैट. तो Fair. जब हम वापस जा रहे थे इन द कार, शी इज लाइक ओ आई एम सॉरी खुशी, ये सब मुझे सिर्फ थोड़ा कंटेंट के लिए करना पड़ा, इसीलिए मैंने किया. एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ब्रो,
what the fuck? Yeah, she is She smart actually like that. does these things on purpose कि Purpose. मैं इसमें दिखूंगी, मैं ऐसे करके दिखूंगी. बट अच्छा है ना वो कि वो आई है तो दिखने की कोशिश कर रही Yeah, है. but But उसका गेम ऐसे- प्लान पता चल गया तो she walked out of the show. I mean, it was like सुबह उनका झगड़ा हुआ था, बहुत बहस, दोनों अलायंस के साथ उसका झगड़ा हो गया. Because she was like यहाँ भी हूँ, जहाँ पे सेफ हाँ. रहेगा वहाँ रहूंगी, जहाँ सेफ वो नहीं रहेगा वहाँ रहूंगी, वैसा. तो उसका गेम प्लान पता चल गया and she was like yelling, she was crying. और फिर जब हम पावर चेम्बर में गए थे तब ये बात निकली कि तेरा गेम प्लान पता चल के आपको ही उड़ेगा तो तू उड़ेगी. अगर वो उस दिन नहीं निकलती, अगर उसे हम निकालते वोट आउट करके, तो आई थिंक मैं और एक चैलेंज या और एक टास्क तक रुक सकती थी. बट शी वॉकड आउट ऑफ द शो एंड आई गॉट डम्प्ड. Yeah. या Pretty bad. सुपर बैड. Okay. So also this thing also happened recently. The Suzanne. Throwing the tea. Yeah. What do you have to say about that? I think that's very inappropriate. Yeah. ऐसे you can't do that. I think it was planned. जितना Yeah, दीक्षा it was had planned. come और उसने बोला था कि सुजैन ने चाय मंगवा के उसको ठंडी करके रखा था so that she can just go and splash it on her face. So it was all planned. They were I think she was planning it. That's what I heard from Saundarya. She was planning this whole thing for 3-4 days. कि उसे फेंकना था, उसे Okay. फेंकना था. And she just wanted कि एक थोड़ा सा conversation हो, वो मुझे piss करे and then I like And then throw it and I look so cool. क्योंकि मैं controversies के लिए जानी चाहती हूँ, Suzanne. Yeah. I mean, she is small. I mean, I'm not saying कि मैं इतनी बड़ी हूँ, but still she is small. I'm not saying she is naive, but वो पता है वो irrational decisions आप ले लेते हो. I think उसने वही किया and she just wanted to be seen and I think उसको अच्छा खासा footage मिल गया वो चाय फेंक के. Yeah. Yeah, that's what I feel like. But pity I भी तो don't उसके think- बाद. हाँ भाई. I am not saying violence अच्छी चीज़ है, but she deserved it. अगर मुझे कोई ऐसा फेंकता तो मैं तो Honestly. Yeah. भले मुझसे ज़्यादा गुंडी है भाई ये गुंडियां कास्ट कर लिए इस बार मैंने बस दिखाया नहीं इसलिए यार चला somebody is मैं, doing yeah. that thing to you you would Obviously, take it. obviously. Fair enough. And yeah Suzanne that was a bad move. It was girly. Yeah. And also do you want to talk about Shipris? What is the scene with these guys? Oh my god. I don't So know they both were dating and Suzanne said some stuff about Shiv. अंदर आकर भी उसने बोला था because जब हम फर्स्ट डे साथ में थे Suzanne was like there are like possibilities कि मैं आई हूँ तो Shiv Priz might also come Okay. because वो उसका ex and he is like way more famous than her. So she was like, oh, but I was like, oh, he's cute. I mean, I know him बाहर से reels and all देखते औरी के साथ कितने videos बनाता है वो. औरी. So Please come to my birthday party. so no, he charges a lot. No. No? He's my friend. I don't know if he charges. Okay. He's a very friendly person. He just Yeah, goes. he looks very Yeah. sweet. He looks very sweet. But yeah, But so I've events seen- में अगर of course you are famous then you Yeah. are paid to other. come. yeah, no, obviously makes sense. But no, तो वही बात हुई थी कि सुजैन ने कुछ उसके बारे में चीज़ें जाके दो को बोली थी और बात में I think Shiv slapped her What? or I think she slapped Shiv. I don't know what happened. Either way, Something that- happened. Sources नहीं है हमारे पास. नहीं, guys. something happened, but I know that someone slapped someone, and I think it was Shiv that slapped Suzanne. I'm not sure. I'm sorry if I'm wrong, but फिर वो वहाँ से बहुत सारी controversies चालू हुई. वो वीडियो बहुत million views तक गए थे. कौन सा वीडियो? कोई तो उनका वीडियो था, मैंने भी अब तक देखा नहीं है. I have no idea, bro. I have to I'm go out back of to this. Reddit now. Reddit, I'm coming for you. Yeah, that was their scenario though. And she said like a lot of stuff about Shiv. Shiv, you're watching. We need a new reel on this. Yeah, Shiv. थोड़ा engagement और आ जाएगा. No, but yeah, she did say that. If you'll beep it, I'll see it. Will you beep it? Yeah. She said that he's. What? He could be. Yeah. Huh. Yeah, but she said that, oh, he's gay, that's why we did not end up together. Obviously, अगर कोई इंसान बुरा होता है तो अपनी साइड की स्टोरी क्यों ही बताता है? ये फिर गाली खाएगी अब सुजैन. Okay. ठीक है. Thank you for the tea, guys. चाय हमने कॉफी पी ली है, हो गया हमारा. चलो अब चलते हैं. चलो. मिल गया content. Like, do you have one word to describe your journey? I learned a lot about myself and मुझे ये भी पता चला कि मैं अकेले बहुत कुछ कर सकती हूँ. तो I think being like standing out and being like an alpha woman, alpha queen, Yeah. whatever you want to say. Beta gamma. Beta gamma. But yeah, I would like to describe my
स्प्लिट्सविला का जर्नी लाइक दिस, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर भी अपॉर्चुनिटी मिली थी फॉर सीजन 15 बट आई कुडंट गो. Okay. तो Why? आई गेव ऑडिशंस, और वो कास्टिंग जो थर्ड पर्सन होता है उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था. आई थिंक इट वाज फॉर 11-12 मिनट्स. तो उन्होंने वो लिया एंड मेरा अकाउंट बैन हो गया था. आई हैड 120K ऑडियंस एंड इट गॉट बैंड. सो दे वर लाइक यू डोंट हैव अ सोशल बैकग्राउंड टू प्रमोट द Show. या. बट देन लेटर जब ये शो के लिए मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तब मैंने उन्हें बताया था कि लास्ट सीज़न के लिए भी मैंने ऑडिशंस दिए थे बट वो कभी पास हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं था. दे वर लाइक दैट्स नॉट ट्रू. whenever you're giving an audition, whenever you're like passing on the audition, please do it on the official website and don't come through third person. Yeah, because they have been casting people who doesn't have any social media Yeah, presence also. yeah. Like the previous season का concept ही Axis पे था. Yeah. So होता है. There are a Yeah. lot of fake people. People, out there. yeah. One word for you. I think it was very overwhelming, but also very wholesome. I think I've had very sad days where I've cried a lot, but I've also had very happy days where I felt very complete because I was away from my family, my phone, my actual friends, and I still felt very wholesome. So I think it was nice overall. You want to say anything about the show and about me? I think जिससे you're मैं really reel कटवा सकूं. क्या? Reel कटवा जिससे मैं सकूं. reel कटवा सके. Yeah, no, but you look very pretty. I really love your blazer. I love your style, girl. Thank you. I think you are also really sweet, really Yeah, nice, and you yeah. made us feel very welcomed and very, very comfortable. I So feel like thank you're you for also. that. I feel like you're also a Bakchodan person. She Yeah, is just like me. definitely. Yeah, we should kiss. Okay, so this Thank was you for it. having us. Yeah, thank of you so course. much. Yeah, for thank you so having much, and us. also for the hamper. Oh, Yeah, share. we'll Please share, yeah. Please do. Don't fight for it. Splitsvilla खत्म हो चुका है. Be nice to each other. Right? Yeah, nice to be each nice other. to Be each other. kind, guys. Yeah, don't make that face. We are nice to Okay, each so other. this was it, and I had so much fun with you guys. You guys are Yeah, beautiful ladies, and you likewise. have like a bright future ahead. And it's just a show. बहुत Yeah. कुछ करना बाकी है. Vote out हो गए तो क्या हुआ? धोखा मिला आपको तो क्या Yeah. हुआ? But ठीक है. You learn something out of Yeah. it. And to my fans and followers, please show love to this episode ताकि हम और बना सके. पैसा दो तो हम ऐसा और लगा सके. And yeah, thank you so much for watching it, and let me know नया दूसरा डुओ यहाँ पर कौन आने वाला है. And thank you so much. Love you. Bye.